Hello future doctors, this is UJJAL ROY, medical mentor, founder and director of the Engineers Gurukul. Today I'm going to start with the second lecture on the topic breathing and exchange of gases, where the subtopic I'm going to start is about respiratory volumes and mechanism of breathing. Babu, in the last class we have talked about the basic idea about respiratory organs. Over here in this topic we are going to mainly talk about how the breathing occurs, and then we are going to talk about the respiratory volume. Again, in the last mini class I have talked about that the respiratory volumes are the most important. Why? Because if you see the last 20 years, not less than 5 years, the question came on respiratory volumes. So let us start with the mechanism of breathing first. Now, what is this mechanism of breathing? Normally we know we can classify breathing into two different ways. One is inhalation or inspiration. Other one is exhalation and expiration. So, inhalation means inspiration, exhalation means expiration. These two together makes breathing process. Now, for this breathing process, there are two types of respiratory muscles which are required. One is intercostal muscle, which is also called as a rib muscle. That means in between two ribs, if these are the two ribs, what we can see is there are some muscles present. These muscles are intercostal muscles. And the second type of muscles are the dome-shaped muscles called diaphragm. And these diaphragm are also called as radial muscles. So these are the two muscles which are required for breathing purpose. So how this occurs, let us go into the details of it. When we talk about intercostal muscle or rib muscles, there are two types of muscles. Intercostal muscles are even of two types. One is external intercostal muscle and the one is internal intercostal muscle. Now, Babu, listen to me. It is EICM, external intercostal muscle. So we have to write in short EICM, external intercostal muscle, and the one is internal intercostal muscle. And it's just like biceps and triceps. What we know about biceps and triceps? Biceps and triceps, both of them are antagonistic muscles. These muscles are antagonistic to each other. That means when you contract biceps, the triceps relaxes. When you contract triceps, the biceps relaxes. So, एक जब contract करता है, दूसरा relax करेगा. दूसरा जब contract करेगा, the earlier one is going to relax. तो ये दो muscles के बारे में हमें ये याद रखना है. जब ये contract करेगा तो ये relax करेगा. जब ये contract करेगा तो ये relax करेगा. So that is it. The second type of muscle is diaphragm. So let us talk about how inhalation occurs. How inhalation occurs. See, inhalation कैसे होता है? See, let us consider these two are the rib muscles and this is diaphragm. This is diaphragm. Now, इन दोनों में rib muscles में जो बाहर का है वो है external. So ये दोनों, these two are EICM, and these two are IICM, internal intercostal muscles, and this one is diaphragm. This one is diaphragm. Now, देखो जब inhale करते हैं, when we show inhalation, तब देखो inhale करने के समय जब inhale करेंगे, our lungs goes outward and upward. It goes upward and outward. That means by the help of the muscles, किसी भी तरह हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, लंग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. So external intercostal muscles contracts as well as diaphragm contracts. ये दोनों मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब ये नीचे की तरफ आ जाता है
और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने मतलब ये बाहर की तरफ जाता है। तो ये अगर बाहर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, अंदर वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि डायफ्राम भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द प्रेशर? द प्रेशर डिक्रीजेस। सो इफ द प्रेशर डिक्रीजेस तो क्या होगा? द एटमोस्फेरिक एयर ऑटोमेटिकली फ्रॉम आउटसाइड रशेस इन, बाहर से वो अंदर की तरफ एयर अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे कि इंस्पिरेशन हुआ। सो दिस इज हाउ इंस्पिरेशन ऑकर्स। सो अगेन आई रिपीट, व्हाट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन कैसे होता है? देखो, अभी आप जब सुन रहे हो ये वॉलंटरी एक्शन से आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, बट जब सोते हो आप, तब देयर मस्ट बी समबडी, देयर इज सम पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच टेक्स कंट्रोल ऑफ दिस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और उसका आंसर क्या है? आप जानते हो, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड टू सम एक्सटेंट पॉन्स। वो पढ़ेंगे इन रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ अंडरस्टैंड, सो इंस्पिरेशन, तो यहां पे इनहेलेशन में external intercostal muscles and diaphragm contracts. So name the muscle which relaxes. और कौन muscles बाकी है जो रिलैक्स करने के लिए बैठा है? Definitely internal intercostal muscles relaxes. So by the help of this muscular changes, the volume increases, the pressure decreases, automatically the air from atmosphere rushes in, called inhalation or inspiration. I think this is okay with you. What is going to happen in exhalation? इसका opposite होने वाला है in exhalation. Exhalation में क्या होगा? What happens in exhalation? In exhalation, what happens? In exhalation, what is going to happen? See, this is the intercostal muscle. Inside जो है वो क्या है? अंदर वाला जो है वो internal intercostal muscle है। So, और ये क्या है? ये डायफ्राम है। This is diaphragm. This is diaphragm. This is diaphragm. Okay. The other term for diaphragm is radial muscles. Radial muscles. Now, when internal intercostal muscle contracts, जब ये contract करेगा, तो definitely कौन दो muscles relax करेंगे? Diaphragm is going to relax. And also EICM, external intercostal muscles, is also going to relax. ये दोनों muscles relax करेंगे and only the internal intercostal muscles contracts. When it contracts, automatically the volume is going to decrease and pressure is going to increase. Pressure inside the lung capacity, lung volume is going to increase. इतना ज्यादा increase कर जाएगा कि ये बाहर के एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली एयर फ्रॉम इनसाइड रशेस आउट, कॉल्ड एक्सपिरेशन। सो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों मस्कुलर मूवमेंट के लिए होता है, विच वी हैव लर्न्ड राइट नाउ, विच इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ऑटोमेटिकली कैसे होता है? व्हेन वी आर इन स्लीपिंग कंडीशंस बाय द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पॉन्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन लेटर टॉपिक। ओके, सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. The next topic that we are going to talk about is about the respiratory volumes. So when we talk about the respiratory volume, so this is about respiratory volume. So respiratory volume. Respiratory volume, ये star point है. It is a star point for NEET examination. It is measured by an instrument called spirometer. And the record is recorded in spirogram. The record of that is recorded in spirogram. Okay. What is the first volume that we must know, which is there in NCERT? It is about tidal volume. अब ये tidal volume is represented by TV. What is tidal volume? The volume of air that is inspired or expired after normal breathing. Normal condition में जो हम सांस, जितना हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं इन रेस्टिंग कंडीशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. सो टाइडल वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना है? इट इज 500 ml. कितना है? 500 ml. हमें ये याद रखना है, देयर इज नो अदर वे आउट.
So during resting condition, the amount of air that we, the volume of air that we inhale and exhale is called tidal volume. कैसे याद रखोगे? सोते वक्त आपके पेट में हाई टाइड और लो टाइड आता है बाबू, तो हाई टाइड और लो टाइड से टाइडल वॉल्यूम. ओके, अब वे सोते हुए क्यों? बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन वी आर टेकिंग रेस्ट. सो रेस्टिंग कंडीशंस. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अबाउट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जब भी हमें ये वर्ड मिलेगा रिजर्व, मतलब याद रखना है, रिजर्व मतलब फोर्सिबल, फोर्सिबली, जोर से, फोर्सिबली. So inspiratory reserve volume matlab, which is also represented by IRV, the maximum volume of air that can be inspired forcibly after normal inspiration. ये last वाला दो term, दो word बहुत important है. Forcibly inspiration लेना, but after what? After normal inspiration. Normal inspiration के बाद जोर से forcibly inhale करना, उसको कहते हैं inspiratory reserve volume, and the volume is 2500 to 3000 milliliter. 2500 to 3000 milliliter. बाबू, there is no other way out but to remember it. आपको याद रखना ही है, there is no other options. तो इतना तो हम फोर्सिबली ले लिया. कितना टाइम्स बढ़ गया? टाइडल वॉल्यूम से कितना टाइम्स हमने ज्यादा लिया? 6 टाइम्स, क्लोज टू 5 to 6 times we have taken in forcibly. What is next? जोर से सांस लेंगे तो आस्ते नहीं छोड़ेंगे, जोर से ही छोड़ेंगे बाबू. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. व्हेन वी एक्सेल फोर्सिबली, दैट इज कॉल्ड ERV, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. अगेन ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. यही तो ऑप्शन में आ जाएगा. तो मेजॉरिटी ऑफ यू स्टूडेंट्स, यू नो, पूछने से बोल पाओगे, बट एनसीईआरटी का लाइन में क्या लिखा था? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. सो व्हाट इज द वॉल्यूम? द वॉल्यूम इज 1000 to 1100 मिलीलीटर. नाउ हमने लिया इतना, छोड़ा इतना कम क्यों? बाकी कहां गया? बाकी कहां गया? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. बाकी कहां गया? फाइन. सो वी हैव टेकन 2500 to 3000 ml of air, but when we forcibly expire it, when we forcibly exhale it, the volume becomes 1000 to 1100 ml, which we call it as ERV, expiratory reserve volume. अब नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेसिड्यू? जो रह जाता है रेसिडुअल, रिप्रेजेंटेड बाय RV. मतलब जोर से सांस लिया, जोर से सांस छोड़ दिया, उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है लंग वॉल्यूम के अंदर, लंग कैपेसिटी, लंग थोरैसिक केज के अंदर. फाइन. इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन. नाउ थिंक अबाउट इट. व्हाट इज दैट? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. अगेन एंड ऑफ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, एंड इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्सिबल एक्सपिरेशन इंपॉर्टेंट है. So, मेरा काम है बाबू, आप लोग सभी पढ़ते हो, मेरा काम है just to have a fine tuning of that. Now think about it. So at the end of forcible expiration, so this is about residual volume. And what is the volume? The volume is 1100 to 1200 milliliter. 1100 to 1200 milliliter. ये रेसिड्यू रह जाता है. इसके अंदर there is a term called anatomical dead space, which is not there in NCERT, but is very very important. Fine. Anatomical dead space को कहते हैं the amount of air that remains inside the trachea, जो ट्रैप रहता है ट्रैकिया के अंदर, बिकॉज ट्रैकिया तो कभी कोलैप्स नहीं करेगा, बिकॉज क्या है वहां पे? C7 कार्टिलेज है, तो कोलैप्स नहीं करेगा. सो द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बिकॉज ये कंडक्टिंग जोन में, रिमेंबर इन वेबल मॉडल देयर इज अ कंडक्टिंग जोन. कंडक्टिंग जोन में जो अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है विच नेवर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वी कॉल देम एज anatomical dead space. And what is that volume? The volume is only 150 ml. 150 milliliter is the anatomical dead space. So this is again very very important. Come down to inspiratory.
कैपेसिटी, किसको कहते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो दोनों का ऐड करने से क्या मिलेगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. क्या होगा डेफिनेशन? द टाइडल टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर इज called inspiratory capacity, which will include tidal volume and IRV both. Volume is 3000 to 3500 ml. The next one is vital capacity. This is very very important बाबू. Vital capacity, बोलो vital capacity अगर मैं आपको बोलूं दो जन के बारे में, एक है उसेन बोल्ट, एक है उसेन बोल्ट और एक है माइकल फेल्प्स. माइकल फेल्प्स, ये दोनों में क्या कॉमन है? और इन दोनों में ही वाइटल कैपेसिटी ज्यादा है. बोलो क्या कॉमन है? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम एंड व्हाई दे आर हैविंग हायर वाइटल कैपेसिटी? व्हाट इज दैट? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन वो क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी. ये तीनों को मिलाकर कितना होगा? 4000 से 4600 ml, which is 4 to 4.6 liter. And this vital capacity is highly evolved in them. वो एक दिन में नहीं हुआ, आस्ते आस्ते वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिए. और ये जितना बढ़ेगा उतना एथलीट्स एंड स्विमर्स उनको हेल्प होगा. So I've given you the answer, but still comment. Okay, vital capacity is this. Now expiratory capacity, what is it? Expiratory capacity, it is TV plus ERV. TV plus ERV is expiratory capacity. TV tidal volume plus expiratory reserve volume 5000 plus 1000 to 1100 ml, that is 1500 to 1600 ml is the expiratory capacity. What is that? The volume of air a person can expire after normal inspiration. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो वॉल्यूम एक आदमी एक्सपायर कर सकता है, एक्सेल कर सकता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. ईसी. फाइन. नेक्स्ट कम्स टोटल लंग कैपेसिटी. व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी. सबको लेकर क्या होगा? सबको लेकर क्या होगा? टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा. मतलब टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद फोर्सिबली इनहेल करना, फोर्सिबली एक्सेल करना, उसके बाद जो रिमेन रह जाएगा रेसिडुअल, सबको मिलाकर क्या मिल जाएगा हमें? टोटल लंग कैपेसिटी. सो व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of, again important, end of forcible inspiration. forcible inspiration कितना है वो? टोटल होगा 5100 से 5800, which is 5.1 liter to 5.8 liter. So human may, in a normal human being, 5.1 to 5.8 liters of total volume is there, which we call it as total lung capacity. Now, the next one is functional residual volume, functional residual capacity, FRC, represented by FRC. What is that? The volume of air that remains in the lungs आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम रह जाएगा एक्सपिरेशन के बाद. सो एफआरसी इज इक्वल टू ईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी द वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम टुगेदर मेक्स फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फाइन. सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. सो ये क्या होगा अमाउंट? ये अमाउंट क्या होगा? ईआरवी प्लस ईआरवी कितना है? ईआरवी हम कितना जानते हैं? ERV plus RV. Come on, answer this in the comment section. What is FRC going to be? अभी आपको बोला गया what is the total volume. Answer me in the comment section. Okay, this is functional reserve volume or capacity. Come down to this particular figure. कभी कभी फिगर ऐसे देकर आपको क्वेश्चन किया जाएगा. What is this? Say the first one. Say the first one is tidal volume. यहां से लेकर यहां तक कितना है? टीवी tidal volume है. और उसके बाद क्या हुआ? जोर से फोर्सिबली इंस्पिरेशन कर लिए हमने. सो 2500 to 3000, ये दोनों को मिलाकर क्या हो गया? आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. देन व्हाट इज बीइंग एडेड? जोर से इनहेल किया, उसके बाद जोर से एक्सहेल भी कर दिया. सो क्या हो जाएगा वो? ईआरवी
1000 to 1100. So ये तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? तीनों को मिलाकर हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी. देखो ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी हो गया. And then the amount of air that remains even after forcible expiration, that remains as residual volume, and that is 1100 to 1200. If you count all of these three together, all of these four together, then it becomes total lung capacity. It becomes total lung capacity. So this is total lung capacity. What is FRC? ERV plus RV. ERV plus RV is equal to functional residual capacity. Functional residual capacity. Fine. Now this is about the respiratory volume. Again, this is very, very important as far as the medical is concerned. Mind you, again to repeat it, respiratory volume is the most important topic about the respiratory system. Go through this topic from the book. It's very, very important. This was for my second lecture. In the third lecture, I'm going to talk about the mechanism of breathing, which is very, very mechanism of respiration, exchange of gases, and the respiratory disorders. It's very, very important one. We have already covered this particular portion. Stay tuned, stay learning, and above all, start solving questions.